From Butler House, an exclusive report and much more on the other side. In our exclusive Republic reports from Batla House, from where Mohsin was arrested by the National Investigation Agency. Finally, Nupur Sharma gets relief, all FIRs clubbed. After NDA walkout, Nitish Kumar takes oath as Bihar Chief Minister for the 8th time. It's the biggest interview of once Nitish top aide Prashant Kishore. He tells Republic no role in Bihar political thriller. After a 10-time no-show, fresh action against Mamata's man as CBI mounts legal options against Onubruto Mondo. Starting this edition of This Is Exclusive with the first information now coming in on Republic TV. CBI has essentially made the first arrest in connection with the SSC recruitment scam. In fact, we are given to understand that CBI has arrested a former advisor of SSC, Shanti Prasad Sinha, and former chairman of SSC, Ashok Saha, in connection with the scam. These are the first arrests that have been made in the recruitment scam. Just to put this into perspective, this is the same very scam in which the Enforcement Directorate has arrested the former Education Minister of West Bengal government, Partho Chatterjee, along with his close aide, Orpita Mukherjee. As far as the Central Bureau of Investigation is concerned, we are given to understand that these two arrests have been made. These are the first arrests in the recruitment scam. Earlier, Partho Chatterjee was actually called in for questioning also by the Central Bureau of Investigation, but no arrest was actually made. In fact, as far as the details of the arrest is concerned, we are trying to get in more details right now, but the preliminary information that we've got right now is that two arrests have been made. This is perhaps the first arrest that has been made in connection with the SSC scam. CBI has basically arrested the former advisor of SSC, Shanti Prasad Sinha, and the former chairman of SSC, Ashok Saha, in connection with the scam. That's the latest that's coming in on This Is Exclusive. First on Republic, getting in full details of this recruitment scam. In fact, investigation still underway. We are also given to understand that there is a possibility that the Central Bureau of Investigation could perhaps also move in an application before the court seeking permission to once again question Partho Chatterjee following the arrests that have been made. But as far as this case is concerned, these are the first big arrests that has been made in the teachers recruitment scam in the state of West Bengal. In fact, there are two arrests that have been made in the SSC recruitment scam. In fact, we are being told that Shanti Prasad Sinha and the former chairman of SSC, Ashok Saha, they have been arrested in this particular case. We'll perhaps also try and go across to our reporters in Kolkata to get in more details with regards to this development. We'll track the story very closely. Mohsin Ahmed, a radicalized ISIS sympathizer, was arrested by the National Investigation Agency on 6th of August. Now, this was for his alleged involvement in raising money from ISIS sympathizers in India and sending it abroad in cryptocurrency form. Now has been sent to the NIA custody till 16th of August. In fact, Republic has tracked down from the very place where the arrest has actually taken place. We're getting you an exclusive report from Jogabai Extension in Butler House in the national capital. This is the very place from where Mohsin was arrested, and then we'll also bring in our reporter Harsha on this broadcast to break it down for all our viewers.
what's the connection? How exactly was money that was basically raised and then how it was sent to countries like Syria? First, take a look at this report and then we go across to our reporters on the ground. Mohsin Ahmed, who was arrested by the National Investigation Agency on August 6th, has been sent to the National Investigation Agency's custody by the Batla House Court till August 16th. Republic has reached to the spot from where NIA has arrested the accused Mohsin Ahmed. This is F18/27 Joga by extension Japani Gali in Batla House, from where agency NIA has arrested Mohsin Ahmed. Mohsin Ahmed, the student of Jamia Millia Islamia University, was found regarding his links with terror outfit ISIS. Mohsin Ahmed was arrested on August 6th for alleged involvement in raising money from the ISIS sympathizers in India and sending it abroad in cryptocurrency form. The arrest was made on charges of being an active member of the Islamic State. मेरी बिल्डिंग में मेरे यहाँ दोस्त आते हैं, मेरे यहाँ 8-10 लोग आते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। अच्छा, मेरी बिल्डिंग में कोई कुछ नहीं कहता मुझे। 8 लोग आ रहे हैं, 10 लोग आ रहे हैं, लड़की आ रही, लड़के आते हैं, सब आ रहे हैं मेरे यहाँ पे। मैडम सबको सब मालूम है, आपको मालूम है, सबको मालूम है। एक आदमी रियर में अगर वो आए होंगे, कोई चलता बढ़ता दिखाई दिया होगा, तो उसने देखा होगा तो उसको ही पता है। अब वो कौन था, किसने देखा, ये नहीं पता। The arrest was made following searches at his premises, among other locations, in case registered by the NIA regarding online and on-ground activities of the ISIS on June 25th. Bureau Report, Republic TV. Let me also bring in my colleague Harsha, who's got us this exclusive report from Butler House. Harsha, you've spoken to multiple people on the ground to get a sense of how Mohsin was essentially operating. They seem to be tight-lipped, given that some have basically indicated that they were not very sure who this person was. What is it that you're picking up? Because part of it that we understand is that he was basically targeting those very ISIS sympathizers across the country. They were basically generating the money, and the larger fear that appears is that this was all being done. The money that was being sent out of India after being collected here in the country was being done through crypto exchanges, which essentially means wallets that were created in countries like Syria, and then the money was sent across. What more did you actually find out during your investigation on the ground? Exactly, Shravan. We went to this Jamia Nagar Batla House Joga by extension, surely known as the very tight area where all the Muslim lives there, and we got to know that Mohsin Ahmed was living on the 4th floor of the F18/27, and the landlord is Harun. And you will be shocked to know, Shravan, that since the time Mohsin Ahmed has been arrested, this landowner Harun is also underground. Police is also trying to trace Harun and know the landlord. How did he give the flat on rent to Mohsin Ahmed? The boys in connection with them, they were left free by NIA, but clearly he was in touch with so many sleeper cells. And earlier also we have seen that in places like these Jamia Nagar, Zakir Nagar, Batla House, we have initially also seen that many sleeper cells have also been arrested by agencies. And now in the investigation, there are many thorough checks which are being made by the agency. But I tried talking to different people over there. We went to the property dealer who have given the flat on rent. We tried talking to the nearby residents who were living in that area. They clearly were saying again and again, this is being targeted. The Muslims are being targeted. We all know what is happening. They were not aligning with this thought that it could be the security issue for the nation, that someone is living in that area could be dangerous for the country. He's involved in the cryptocurrency thing, collecting funds and sending it through cryptocurrency to Syria. And he was associated with so many people in university, Jamia Millia itself. And not only that, according to our investigation, we also got to know that some sleeper cells were made active by Mohsin Ahmed in Deoband and Muzaffarnagar area as well, because search operations were carried out in Deoband, Muzaffarnagar, Saharanpur, and also Bhopal, Madhya Pradesh, Gujarat as well. So there were so many things which we picked, but clearly this is the investigation part, and so many documents have also been seized, summoned from him. Back to you. Well, thank you very much, Harsha, for getting us that exclusive report from Batla House, the very place from where Mohsin was arrested by the National Investigation Agency. Moving on to the other big exclusive that we're getting for you tonight, with Nitish Kumar back in the Mahagathbandhan folds, poll strategist
Prashant Kishore spoke exclusively to Republic TV, asserting that there were no talks in the political corridors on the Bihar Chief Minister's selection as the prime ministerial candidate. While Kumar's exit from the NDA is being seen as his bid to further his national ambition, Prashant Kishore denied that the JDU's move could have a national impact. Let's listen. मौजूद हैं देश के सबसे बड़े चुनावी रणनीतिकार, जिन्होंने चुनाव कैंपेन को एक नया आयाम दिया। प्रशांत किशोर अभी बिहार में राजनीति में अपना हाथ आजमा रहे हैं और पूरा बिहार का दौरा कर रहे हैं और उसके बाद 2 अक्टूबर को पदयात्रा करेंगे। राजनीति पर अच्छी पकड़ रखते हैं। प्रशांत जी, मेरा पहला सवाल है, आप पैन करते रहिए। मेरा पहला सवाल है कि आपने नारा दिया था बिहार में 2015 में, बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। हमने अपने चैनल पे कल से चलाना शुरू किया है। बिहार में बहार हो नहीं तो हमने चैनल में चलाना शुरू किया है, अब की बार बिहार में पलटी मार सरकार। तो क्या नीतीश जी क्या पलटी मारते रहेंगे इसी तरीके से अपने राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए? देखिए, मैं इस तरह के शब्द प्रयोग करता नहीं हूँ किसी के लिए। मैं आपको ये जरूर बताना चाहूँगा कि 2012-13 से नरेंद्र मोदी जी का जो नेशनल राजनीतिक पटल पे प्रादुर्भाव हुआ है, उसके बाद से जो उसका आफ्टर इफेक्ट आप कह लीजिए, जो बिहार की राजनीतिक स्थिति पर पड़ी है, एक अस्थिरता का दौर शुरू हुआ 12-13 से। और भारत उसी दिशा में, उसी कड़ी में एक नया अध्याय है। 12-13 से अभी तक ये सरकार के संदर्भ में 6वां प्रयोग है। ये 6वीं सरकार है जो पिछले 10 साल में बनी है। तो आप और हम अपेक्षा ही कर, 2 चीज़ नहीं बदली। हर उस 6 के 6 प्रयोगों में नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री रहे हैं और बिहार की जो स्थिति है, जो लोगों की परेशानी है या बिहार की जो बदहाली है, उसमें भी कोई बहुत परिवर्तन नहीं दिखा है। तो अब लोगों की अपेक्षा होगी, मेरी भी अपेक्षा ऐसी होगी कि अभी जो नई सरकार बन रही है वो कुछ नया करे, नए तरीके से करे, ताकि आने वाले 2-3 साल में। तो आपको क्या लगता है कि ये लास्ट शॉट है प्राइम मिनिस्ट्रियल एम्बिशन के लिए? आपने भी तैयारी की थी 2017 में, आप इनको बड़ा नेता बनाना चाहते थे, देश भर के तमाम मुख्यमंत्रियों से आप मिल रहे थे। ये तो देखिए, ये बिल्कुल ही मीडिया का क्रिएशन है कि आप, ये मुझे ऐसा लगता है कि ये बिहार स्पेसिफिक, बिहार सेंट्रिक प्रयोग है। इसमें कोई नेशनल बात है नहीं। कोई भी काम, बिहार बड़ा राज्य है, वहाँ कोई राजनीतिक डेवलपमेंट होगा तो उसका नेशनल इम्प्लीकेशन हो सकता है, लेकिन नेशनल रणनीति बनाकर या कोई परियोजना बनाकर उसके बाद इसको बिहार में किया जा रहा है, ऐसा मुझे नहीं लगता है। आपको नहीं लगता कि शरद पवार, ममता बनर्जी, नवीन पटनायक, आप स्टालिन के साथ काम कर चुके हैं, वो लोग इनके इर्द गिर्द आएंगे? क्योंकि शरद पवार एक मुख्य भूमिका में है। मुझे ये सब पता नहीं है। शरद पवार जी की खुद की सरकार वहाँ महाराष्ट्र में चली गई, वो नहीं बचा सके, तो देश भर में क्या करेंगे नहीं करेंगे, मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे नज़र से, जो मेरी समझ है, शायद गलत होगी, कि बिहार में जो हुआ ये बिहार सेंट्रिक प्रयोग है। इसमें नीतीश कुमार जी एक फॉर्मेशन से निकल के दूसरे फॉर्मेशन में जा रहे हैं। उनको लगता है कि शायद इस नए फॉर्मेशन, इंटरनल कॉन्ट्राडिक्शंस कहने का मतलब कि पूरे देश भर में नीतीश कुमार को कोई मानेगा नहीं प्रधानमंत्री का उम्मीदवार। मैं कह रहा हूं कि वो अभी एजेंडा ही नहीं है। जितना मैं थोड़ा बहुत नीतीश कुमार को जानता हूं, मुझे नहीं लगता है कि उनको ऐसा लगता होगा कि इससे नेशनल कुछ हो जाएगा। हाँ, ये जरूर है कि अगर बिहार में कुछ होता है, कल ये जो फॉर्मेशन बना है इससे बहुत अच्छी सरकार चलने लगे, एक राजनीतिक मोमेंटम खड़ा हो जाए, जन आंदोलन खड़ा हो जाए, तो उन बातों को तो मेरे पास कोई एजेंडा उनका क्या है, क्यों भागे बीजेपी से वो? ये तो वो बताएंगे हमसे। आपको मौका मिला आपको देखने का? नहीं, भागे क्यों, मैं इसका दूसरे तरीके से जवाब दूंगा। मुझे ऐसा लगता है, जितना मैंने उनको देखा है, समझा है, 2017 से 2022 तक जो वो भाजपा के साथ थे, वो कभी उससे कंफर्टेबल मुझे दिखे ही नहीं, जहां तक मैं समझ पाया। आपने प्रयास भी किया था 17 में, लालू जी के पास गए थे कि फिर से महागठबंधन की सरकार बन जाए, जब वो कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे। नहीं, जब 17 की बात नहीं है, जब मैं जदयू में था तो भी मैंने ये ऐसा 18 ये लालू जी और राबड़ी देवी ने हमें ऑफ रिकॉर्ड में कहानी बताया था। मैं आज दर्शकों को बताना चाहता हूं कि आप गए थे और कि महागठबंधन का फिर से नया स्वरूप हो और नीतीश कुमार को देश के राजनीति पटल पर लाया जाए। ये मैं आज ब्रेक कर रहा हूँ, ऑफ रिकॉर्ड कन्वर्सेशन को ब्रेक कर रहा हूँ। आप उस कहानी को बताइए कि क्या हुआ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको जो नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, 2017 में नीतीश कुमार जी जब भाजपा के साथ गए, उसके बाद से कम मेरे से उनकी जितनी बातें हुई हैं, मैंने उनको कभी बहुत कंफर्टेबल नहीं पाया है उसमें, लेकिन पब्लिकली तो उस व्यवस्था से खुशी नजर आए थे। तो इसलिए मैं यही देखता हूं कि जिस व्यवस्था में वो कंफर्टेबल नहीं थे, वो किन्हीं वजहों से शायद अब
उन्होंने सोचा होगा कि नहीं अब महागठबंधन का प्रयोग करके देखते हैं, लेकिन इसका पब्लिक के नज़रिए से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। चाहे आप भाजपा के साथ हो, भाई जब वो भाजपा के साथ आए तो भी बहुत लोगों ने कहा कि ये बहुत बड़ा प्रयोग है, फिर से पुराना जो एनडीए खड़ा हो गया, ये इसको कोई नहीं हिला सकेगा। आपने देखा कि 5 साल में उसकी स्थिति क्या हुई, जो चुनाव। आपको क्या लगता है कि अटल आडवाणी का भाजपा और नरेंद्र मोदी अमित शाह का भाजपा में अंतर है और नीतीश कुमार की बनी नहीं अमित शाह और नरेंद्र मोदी से, ये चूक कर गए? नहीं, मैं इस तरह से नहीं देखता हूँ इसको। देखिए, हर राजनीतिक दल भी जो हैं वो भी इंडिविजुअल के रिलेशनशिप पर भी हैं। शायद उनका आडवाणी जी वाजपेयी जी से उनका तारतम्य बेहतर था। उस समय की जो भाजपा की लीडरशिप थी, जो उनकी व्यवस्था थी, वो उसके साथ उनका जो सामंजस्य था वो बेहतर रहा होगा। उसके मुकाबले आज वो शायद उनको डिस्कम्फर्ट हुआ होगा। लेकिन इस पर बहुत मैं ये कह रहा हूँ कि ये कोई ऐसा तो है नहीं कि पहली बार हुआ है, पिछले 10 साल में 6वीं बार हो रहा है, तो इसकी इतनी चर्चा क्यों कर रहे हैं? नहीं, फ्लिप फ्लॉप करते क्यों हैं वो तो अपनी पार्टी को बचाने के लिए? ये तो आप उनसे जाकर पूछ सकते हैं। आप बताइए ना, आप तो रहे हैं। पार्टी को बचाने की बात नहीं है। उनको लगता है कि भाई ये करके हम यहाँ पर मुख्यमंत्री रहेंगे, और जो वो बताते हैं कि भाई बिहार की जनता का सेवा हम करते रहना चाहते हैं, तो उनको लगता है कि जिस फॉर्मेशन में भी बेहतर वो काम कर सकते हैं उसके साथ उनको रहना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चैलेंजर के रूप में उभर सकते हैं वो? मैं बिल्कुल ही इन बात पे टिक्का टिप्पणी मैं कह रहा हूँ। मैं इस पूरी घटना को बिहार के नज़रिए से देखता हूँ। मेरी जो थोड़ी बहुत समझ है, इसका बाहर इम्प्लीकेशन कम से कम आज शॉर्ट रन में कुछ नहीं है। अच्छा, इसकी पटकथा जो है लालू जी के साथ आने की और नरेंद्र मोदी के साथ छोड़ने की, ये बहुत पहले से लिखी जा रही थी। इस पर मैं वॉच कर रहा था 4 महीने से। आपसे बात भी हुई है कई बार मेरी। सबसे बड़ी बात कि इसी कड़ी में आरसीपी सिंह को मुझे लगता है मोहरा बनाकर, और आपसे भी दिल्ली में मिले थे, उसके बाद खबर आई कि प्रशांत जी से मेरे संबंध अच्छे हैं, जबकि प्रशांत जी को तो धक्का मार के पार्टी से निकाला गया था उसी आरसीपी सिंह के चलते। और उसी दिन नहीं, मैं कंप्लीट कर लूं, मैं बहुत प्रिवी हूं बातों की। आपको जेडीयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का ऑफर दिया गया? नहीं, इन बात को मैंने आपने पीछे भी इंटरव्यू में पूछा है, मैंने उस समय भी खंडन किया था कि इस तरह के अफवाह पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। नीतीश जी मेरे से ज़रूर मिले थे मार्च में, मेरी उनसे अच्छी बात हुई थी। उस समय भी मैंने उनको कहा था कि मैं बिहार में एक नया ऑर्गेनिक प्रयास करना चाहता हूं, और आप चूंकि बिहार के मुख्यमंत्री हैं और पहले उनकी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेडीयू के क्यों नहीं बने? क्या आप नीतीश कुमार पर भरोसा नहीं करते हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं भाई, ऐसी कोई बिल्कुल बात है। ऑफर नहीं दी उन्होंने। आप जबरदस्ती अपने से ऑफर दिलवा रहे हैं। नहीं, तो क्यों नहीं बने आप? क्यों आप उन पर भरोसा नहीं है? क्योंकि एक बार आपको पार्टी से निकाल दिए थे आरसीपी सिंह के चलते, अब आरसीपी सिंह को निकाल रहे हैं। जो वही ललन सिंह पेट में दांत बोलते थे उनको। देखिए, अगर आरसीपी सिंह जी के वजह से मैं रहता या छोड़ता, तो आज आरसीपी जी पार्टी में नहीं, मैं चला जाता उनके पास। जैसे आप बता रहे हैं कि वो हमको बुला ही रहे हैं, क्योंकि आप नीतीश कुमार को पहचान गए कि कब ये धोखा दे देंगे, पीठ में छुरा भोंक देंगे। ऐसी बात नहीं है। मैंने ऑन कैमरा कहा है कि मेरे उनसे व्यक्तिगत बहुत मधुर संबंध है। जो सरकार, ऐसा व्यक्तिगत संबंध है कि धक्के मार के निकाल दिया, व्यक्तिगत संबंध बना रहे हैं आप? वो धक्के मार के निकालने की बात है कि भाई उन्होंने, उनकी पार्टी है, उनकी पार्टी ने सीए एनआरसी पर एक स्टांस लिया था, उस पर मेरा उनसे विवाद हुआ, उसकी वजह से उनकी वो प्रेरोगेटिव उन्होंने निकाल दिया था। बहुत अच्छा किया उन्होंने मुझे। Final Rupur Sharma gets the relief. All FIRs are clubbed. And here's a look at some news in brief. A school teacher allegedly slapped a girl in an incident that has been reported at a government primary school in Majri in Panchkula. The CCTV footage that has been captured revealed that the 5-year-old girl was brutally assaulted by a man in the corner of the school. The district education officer of Panchkula has directed an inquiry. In a shocking incident, a 3-year-old girl died after she was brutally beaten up by her father. The incident took place in the Saifabad area of Telangana. The police said that the incident took place on the 7th of August when the 3-year-old was playing with water in the washroom. The accused thrashed her with a big broom and then threw the girl on the floor, because of which there was a blood clot in her brain and she passed away. The Indian Met Department has said that from today, intense wet spells are likely to continue over the Ghats and areas of Madhya Pradesh, Maharashtra and Karnataka. The IMD has also issued warnings for areas which are witnessing severe waterlogging. Earlier today, waterlogging was reported in several places after heavy rainfall in Karnataka's Belgavi.
Almost 48 hours after a boy who had fallen into an open drain in Gurugram remained untraced. Massive rescue operations have been launched by the NDRF and the SDRF in the Gadoi village to rescue the 7-year-old who fell into the drain on the 7th of August. Both the sons of Sri Kanhaiya Lal, who died in the incident in Udaipur, met the Chief Minister of Rajasthan at the Circuit House in Udaipur. They expressed their gratitude for being given government jobs. The Rajasthan Chief Minister assured strictest legal action on the culprits. Couple sir, one question. Couple sir, one question, sir. Varsha Rao appearing at the ED office. CISF Jawan injuries who took the bullets is dead. Well, after the JDU officially walked out of the NDA in Bihar, the BJP leader Shahnawaz Hussain has said that there is no solid reason for the JDU to part ways with the ages-old partner, the BJP. धरना की पे जा कोशिश की है, एकदम गलत आरोप है, कोई इसका मतलब नहीं है। हम लोगों ने तो ईमानदारी से गठबंधन को निभाया, उनको पूरा सम्मान दिया। जिन्होंने उनको अपमानित किया वो उनके साथ गए। लेकिन एक सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, प्रधानमंत्री बनने की इच्छा है नीतीश कुमार की, क्या कहेंगे आप उसको? अभी तो धरना की पे जा रहे हैं। कांग्रेस एमपीज who are right now protesting. A massive protest which is led by the Latin Catholic Church and supported by the coastal community of Kerala. You can see thousands of fishermen have gathered on the roads of Thiruvananthapuram with their boats and catamarans, demanding that the livelihood issue has not yet been addressed by the government. What they essentially say that when they allowed the Adani port to come, the state government had announced a huge package for the relief of these fishermen. But till now, these packages have not been given. This has led to the fishermen livelihood being destroyed. You can see large number of fishermen supported by the clergy from the Latin Catholic all here. 7 demands have been put up. This is a massive protest. I just want the video journalist to also pan across and show the number of boats which are there. There are lots of boats on the road also, and all these fishermen have brought in their boats. The last time such boats were brought onto the road was during the 2018 floods. Today, the same fishermen who were hailed as heroes by the state government is now demanding that their basic demands, their livelihood challenges are being met by the state government. Amity has been ranked India's #1 private university for the 10th year by India Today, a testimony to Amity's world-class education whilst imbibing values and sanskars in students. Well, after the JDU officially walked out of the NDA in Bihar, the BJP leader Shahnawaz Hussain has said that there is no solid reason for the JDU to part ways with the ages-old partner, the BJP. धरना की पे जा कोशिश की है, एकदम गलत आरोप है, कोई इसका मतलब नहीं है। हम लोगों ने तो ईमानदारी से गठबंधन को निभाया, उनको पूरा सम्मान दिया। जिन्होंने उनको अपमानित किया वो उनके साथ गए। लेकिन एक सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, प्रधानमंत्री बनने की इच्छा है नीतीश कुमार की, क्या कहेंगे आप उसको? अभी तो धरना की पे जा रहे हैं। कांग्रेस एमपीज who are right now protesting. On the reason for the political upheaval in the state of Bihar, RJD leader Manoj Jha has said that this oath-taking ceremony is not just of Nitish and Tejashwi, but also of the common people of Bihar. He further went to say that the people of Bihar do not want BJP's governance anymore.
witness it and be participant in the oath-taking ceremony. You know, Bihar badly needed this. I would say that today is the day when the mandate comes home. Mandate of 17 and mandate of 2000. Now speaking to Republic TV, the Bihar BJP chief Sanjay Jaiswal has said that Nitish Kumar is a habitual cheater at a time when Bihar was on the path to progress. For the first time, industries and jobs were being created. He did this as part of a conspiracy. नीतीश कुमार जी आदतन धोखेबाज हैं और बिहार जब विकास की राह पकड़ लिया था, पहले बार उद्योग धंधे लगने लगे थे और जब पहली बार बिहार तरक्की कर रहा था, तब उन्होंने एक साजिश के तहत यह पूरा कार्य किया है। Never happened when you were under scandal, Karthi. You should be able to speak about it, Karthi. Speaking to Republic TV, RJD leader Tej Pratap Yadav remarked that everyone will get employment in the state. He further added the Mahagathbandhan government will take Bihar to greater heights. हुकूमत से बीजेपी सरकार बनाएगी, ये भी बात कही गई। बीजेपी नहीं बनाएगी सरकार, बीजेपी उखड़ जाएगी। अब हवा में उड़ गई, बिहार ने उखाड़ दिया है बिहार की जनता ने। Ahead of the swearing-in ceremony of the Mahagathbandhan government in Bihar, the BJP leader and Minister of the State Nityanand Rai has attacked the JDU for breaking an alliance in the state of Bihar. He further said that the JDU had betrayed the mandate of the people of Bihar. जी आपने इस्तीफा दे दिया। सारी मीटिंग आज हुई और सब लोगों की इच्छा यही हुई है कि हम लोगों को एनडीए छोड़ देना चाहिए। हमने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा सौंप दिया। क्या दिक्कत हुई नरेंद्र मोदी और अमित शाह से? क्या 24 में प्रधानमंत्री के उम्मीदवार होंगे? देश को आजाद हुए 75 साल हुए हैं। पूरे देश में इस आज़ादी का जश्न मना रहे हैं। विभिन्न चोटियों पर इस फ्लैग को, नेशनल फ्लैग को That's all that we could pack in this edition of This Is Exclusive. On the other side, live and breaking with my colleague, our senior executive editor, Abhishek Kapoor. Thank you so much, Shawan. Let's hit it off with the headlines. Finally, Nupur Sharma gets relief. All FIRs clubbed to be investigated in Delhi. After NDA walkout, Nitish Kumar takes oath as Bihar Chief Minister for the 8th time. इतना तो जरूर कर दीजिए ना कि 14 में जो आए 24 तक के आगे रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे वो हमारा सवाल। Massive political attack by Nitish on Prime Minister, says he came in 2014 but will stay in 2024. ये मुझे ऐसा लगता है कि ये बिहार स्पेसिफिक, बिहार सेंट्रिक प्रयोग है। इसमें कोई नेशनल बात है नहीं। It's the biggest interview of once Nitish top 8 Prashant Kishore. He tells Republic no role in Bihar political thriller. After Tyagi, another political goon is also ex-servicemen now. As India says, stop the goon culture, will BJP act? After 10-time no-show, fresh action against Mamata's man as CBI mulls. Legal options against Anubroto Mondal. Mega showdown in Kolkata against Bengal cash scam as youth take to the streets in anger. All right, now breaking news development, the Enforcement Directorate has carried out search operations under the provisions of the Prevention of Money Laundering Act at 21 premises in Chhattisgarh and one in Jharkhand
in respect to investigation related to smuggling of foreign origin gold and other precious metals through illicit channels from Bangladesh to Raipur via Kolkata. A professional carrier of gold was caught by DRI while smuggling. Remember, we broke the story a couple of days back of drug smuggling and gold smuggling happening via the northeast route from Myanmar. Let's go to Shawan Sen. He joins us live on this story. Shawan, please share the details. It seems like a big international racket being busted, both on the issue of drugs and gold smuggling taking place. Well, in fact, on the 5th, we were the first network to get our hands on this story because this is an international gold smuggling racket, and not just gold. We're given to understand that there are other precious metals that were also being brought in. The route is very interesting. The route is starting all the way from Myanmar. It is basically brought in through West Bengal and finally reaches the gold merchants in the state of Chhattisgarh as well as in Jharkhand. Now, important to point out here is that there were searches that were basically carried out. Now, when the searches ended, this was about 3 days, 3-day long searches that were basically carried out. We're not very sure exactly of the modus operandi at this point in time, but the details that we're picking up is that about 21 locations where these searches were carried out. This included certain gold merchants and also couriers who were basically under the scanner. In fact, if I can just quote from the details that have been provided by the Enforcement Directorate, is that this entire predicate offence of this case happens to be that of the DRI, because they are the ones who had initiated this entire investigation. But it turns out that they've got more inputs. So